What did we discuss in the previous class? Don't remember? Sir, I wasn't there in the last class. Okay, but you should have seen the video lesson then. Sir, couldn't right now. Okay, do that today. We Okay, discussed sir. meaning of organizing. We discussed organizing process. Then we discussed meaning of organization structure. And we had discussed there are two main types of organization structure. One is functional structure, the other one is divisional structure, right? So till here we had discussed both these types of structures also. So now let us compare the two, functional structure and divisional structure. In functional structure, the formation is on the basis of basic functions like finance, production, marketing, etc. So we have a separate finance department, separate production department, separate marketing department, and so on. Whereas in divisional structure, the divisions are created on the basis of products or regions. You were there in the previous class, Dia? Yes, sir. So you respond at least. Specialization. In functional structure, specialized treatment is given to each function. Whereas in divisional structure, specialized treatment is given to each Product. or region. Then responsibility, fixing responsibility. In a functional structure, since the activities of various departments are interrelated and interdependent, it becomes difficult to fix responsibility sometimes when something goes wrong, because each task involves has the involvement of various departments. But in a divisional structure, since the divisions are autonomous, they are independent, if something goes wrong, it is easy to fix responsibility. Which division was responsible for that? Clear? Yes, Yes, sir. sir. Next point is managerial Yes, sir. development. Managerial development is difficult in functional structure as each manager focuses on a narrow range of functions. Marketing manager है, पूरा focus उनका marketing related activities पे ही है. Similarly, the finance manager focuses only on activities related to finance. So, narrow range of functions they are focusing on. But in a divisional structure, the manager of every division has to look after the finance of that division, has to look after about the human resources of that division, has to look after the marketing of that division. So, generalist managers are developed. So each divisional manager gets a chance to perform multiple functions. Cost. Functional structure is economical, whereas divisional structure is costly. Why? Because in each division, then there has to be separate experts for finance, for marketing, and so on. So, and in divisional structure, generally the office building of each division is also separate. So they need separate equipment also, telephones, photocopy machines, all the equipment required for each office is separate. So generally divisional structure is comparatively costlier. Then coordination for a multi-product company. If a company is dealing in many products, then functional structure is difficult for them. It is difficult for them to manage coordination if they follow functional structure. But if they follow a divisional structure, then it is easy for them to coordinate, because for every product they can have a separate division. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we come to importance of organizing.
Both structures are clear. So now we come to importance of organizing. Again, as I always say, to understand the importance of anything, we should try to visualize its absence. So try to visualize absence of organizing and then tell me what can be the points of importance of organizing. So there will be chaos instead of order lines. Yes, very good. What else? Sir, there wouldn't be any intersections between different groups of the company. Okay, fine. Right. So let's discuss these points now. First is adaptation to change. We know business environment is dynamic. Business environment keeps changing. Okay. According to the changing environment, the organization also needs to change its plans, policies, ways of working. If proper organizing is not done, that means the employees will not be clear about their relative position in the organization. They will not be clear about their authority, their responsibility. In such an organization, there will be so much of chaos, as Dia said, that functioning of this organization will be very difficult. And if over and above that some change comes, then it becomes more difficult to incorporate that change when already there is so much of chaos. On the other hand, if in an organization proper organizing has been done, means work has been properly divided into departments, into jobs, every employee knows clearly what his or her role is, authority is, responsibility is, then the work will be carried on in a very systematic manner. And whenever any change comes, that change will also be absorbed by such an organization in a very systematic and smooth manner. Here, Yes, sir. next point leads to specialization. Organizing में हम similar activities को group करते हैं jobs में. Similar jobs को group करते हैं किसमें? Departments में. तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सारा मार्केटिंग रिलेटेड वर्क, फाइनेंस डिपार्टमेंट में सारा फाइनेंस रिलेटेड वर्क. इससे क्या होता है, द एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट by doing similar kind of activities repeatedly, they become expert in those kind of activities. So it leads to specialization. हम अपॉइंट भी स्पेशलाइज्ड स्टाफ को ही करेंगे. फाइनेंस डिपार्टमेंट में हम उन लोगों को अपॉइंट करेंगे जो फाइनेंस में एक्सपर्ट हो. मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हम उन्हें अपॉइंट करेंगे जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, और उनकी एक्सपर्टीज और भी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी बाय डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ जॉब repeatedly day after day. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next point is clarifies working relationships. The role and functions of each job position are very clearly laid out in the organization structure, which minimizes any confusion, any conflicts. So every employee knows clearly to whom he or she has to report and who all have to report to him or her. Next point, effective administration. While preparing the organization structure, when we are preparing the structure, when we are doing the organizing, if any job or any activity gets repeated, तो वो immediately notice में आ जाएगा because everything is in writing. तो पता चल जाएगा अच्छा ये एक्टिविटी तो ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में इस जॉब में आ चुकी है, and we will remove that duplication immediately. So it will avoid any duplication or overlapping of work, resulting in effective administration. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next point is development of personnel. Personnel means employees.
imagine working in an organization where the organization structure is not clear, where you do not know what exactly are your duties, your responsibilities, your authority. How will you feel like in such an organization? Sir, confused. Confused, lack of confidence, demotivated, because all the time you will be bothered by these thoughts कि ये जो मैं कर रहा हूं ये मेरा काम भी है या नहीं, इसको मुझे ही करना है या किसी और को करना था, प्लस क्या मुझे ऐसा करने की अथॉरिटी है या नहीं, डू आई हैव द रिक्वायर्ड अथॉरिटी टू डू दिस और नॉट. सो the employees will lack confidence, they will be confused, they will feel uncomfortable. On the other hand, when proper organizing is done, every employee knows very clearly what are his or her responsibilities, functions, authority. So they will do their job with full confidence. They will use their authority with full confidence. And they will feel very comfortable. And this will lead to their development because they'll be able to put in their best efforts in their work, so they will develop. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Then organizing helps in growth and expansion. Growth and expansion, whose growth and expansion? Organization. Yes, organization's growth and expansion. How? Because when work is being done systematically, only then the organization can grow. अगर पहले से ही काम सिस्टमैटिकली नहीं हो रहा है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रोथ का सोच भी नहीं सकती, ठीक है. और स्पेशली डिविजनल स्ट्रक्चर अगर है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो नए प्रोडक्ट की एक और डिवीजन ऐड हो जाएगी इजीली. So the organization can grow easily if proper organizing has been done. Clear? Yes, sir. Yes, Any sir. doubt in these points of importance or significance or benefits? Sir, we missed fifth point. Fifth we missed. Okay, yes. Ensures optimum utilization of resources. Thanks for noticing. Ensures optimum utilization of resources. When we are organizing, we said part of organizing is also arranging various resources required and allocating those resources to various departments on the basis of requirement of each department. जब हर डिपार्टमेंट को उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रिसोर्सेज मिली होंगी, that will lead to best possible use of those resources. That means no resource will get wasted. Clear? Yes, sir. So all these points of importance clear now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now you are all studying in an organization called NKBPS, right? In the school. Some of you have been placed in section 12C. Some of you have been placed in the section 12D. Okay. These sections were allotted to you by the organization, by the school. You did not have much of a choice in choosing your section, right? So this class and section that has been allotted to you based upon your choice of stream, and then the organization's criteria of allotting the sections, will be called formal organization. What will it be called? Formal organization. Right. Formal organization. So the school is a formal organization in which you have been assigned a particular section. We can say similarly in a commercial organization, we can say employees are assigned different departments. Okay. But tell me, what happens in the recess? Do students of 12C, all students of 12C remain in 12C only? No, sir. Do all students of 12D remain in 12D only? No, sir. No.
what happens? Some students of other sections also come to a particular section. Some students of your section also go to other sections or even other classes. Some of the students go to the canteen or to the ground to have their lunch, right? Now, why? And they have their lunch, they have some conversations with their group of friends. Now, these group of friends belong to different sections and sometimes even different classes, isn't it? Yes, sir. तो ये ग्रुप्स आपको किसने अलॉट किए? आपको किसने बताया कि रिसेस में या फिर छुट्टी होने के बाद आप इन लोगों से बात करोगे, इस ग्रुप में रहोगे? किसने आपको अलॉट किए ये ग्रुप्स? सर किसी ने नहीं. किसी ने नहीं. तो फिर ये ग्रुप बने कैसे? माधव? Sir, according to their subjects. Bit louder, please. Sir, according to their subjects, they were allotted in the different sections. That was about sections, but I am talking about the groups that you are during recess time. वो groups कैसे बने? जिसमें Sir, according to their relation with their friends. Yes, on the basis of your interests, on the basis of your mutual likes and dislikes, on the basis of your vibes. ठीक है, हम कहते हैं ना कि किसी के साथ हमारी मेंटल वाइब्स मैच करती हैं, किसी के साथ नहीं करती. तो इन सब ग्रुप्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो ऑफिशियली नहीं क्रिएट किए गए. फॉर्मल मतलब ऑफिशियल, इनफॉर्मल मतलब अनऑफिशियल. तो ये ग्रुप्स तो अपने आप बन जाते हैं, ठीक है. तो अनऑफिशियल ग्रुप्स हैं. इन सब ग्रुप्स को कलेक्टिवली वी कॉल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. क्या कहते हैं? Informal organization. Yes. Informal organization. This thing happens in all the organizations. जहां पर भी human beings होंगे, वहां पर कोई formal group भी होगा, कोई informal groups भी होंगे, हर organization में. ठीक है. So now we will discuss these two types of organizations: formal organization and informal organization. Now, you should be careful. Do not get confused between types of organization structure and types of organizations. If you are asked, what are the various types of organization structures? What will you say? Functional and divisional. Yes, very good. Functional structure and divisional structure. But if you are asked, what are the different types of organizations? Then Formal and informal. very good. Formal organization and informal organization. So formal, now we'll discuss these two in some detail. Formal organization represents the structure of authority, responsibility relations among various job positions in a firm developed by the top level management for achieving organizational objectives. तो क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? वो जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स का जो नेटवर्क है, स्ट्रक्चर है, उसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. इसको डेवलप कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. क्यों डेवलप किया जाता है? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स. क्लियर? Yes, sir. तो इसके फीचर्स क्या क्या हुए? फर्स्ट फीचर, it is deliberately created by top management. जानबूझकर ये क्रिएट की जाती है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप क्रिएट नहीं हो जाती. कोई स्कूल अपने आप नहीं बन जाता, कोई फैक्ट्री या कोई शॉप, शोरूम अपने आप नहीं बन जाता. डेलिबरेटली क्रिएट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन. सेकेंड फीचर, formal organization clearly defines the authority and responsibility of each and every job position. Third feature, focus is more on work rather than people. The people are known by their posts. If you write an application in the school, to whom do you address it?
Principal. You address it to the principal. You do not address it to the name of the principal. Okay, you do not write Mr. So and so. You write the principal. Right? So designations are given more importance than people. Can you tell me why so? Because people may change, but the designations will remain the same. Earlier we had Mr. Sharma as principal. Now we have Mr. Parashar as principal. If the applications were written by name, suppose a student wrote an application at the time Mr. Sharma was principal. So let us say he wrote Mr. Sharma and then he wrote the application. Let us say next day there was a change of principal. Now the new principal says this application is not addressed to me, it is addressed to someone else. Name is written, some other person's name is written on it. Why should I entertain this application? But when the application is addressed to the principal, whether the previous principal is on the post or the new principal is on the post, they have to work on it. Getting my point? Yes, sir. So work and designations are given more importance rather than people. Fourth feature, it coordinates, links and integrates the efforts of various departments. Fifth feature, the objective of the formal organization is, what is the objective? Achievement of organizational To goals. achieve the organization's objectives, to achieve the organizational goals. Now, benefits or advantages of formal organization. First, it is easier to fix responsibility. हर एक की authority responsibility fixed है, हर एक के job roles duties fixed हैं. So if anything goes wrong, तो हमें पता है कि वो किसका काम था. We can easily fix responsibility. Who is the person responsible for that work? ठीक है, work well done है. अगर if the work is done well, then also we know whom to appreciate. If there is some shortcoming in the work, then also we know whom to discuss with. Unity of command is maintained because in a formal organization we follow the scalar chain. Here. Yes, sir. Yes, sir. Next advantage, there is time bound completion of work. Formal organization में जब भी कोई काम दिया जाता है employees को, they are also told the time limit within which they are supposed to complete that work. So this time bound completion of work helps in achieving organizational goals. Next advantage, since the authority, responsibility and accountability of each and every person of position is very clear, it avoids any conflicts and provides stability to the organization. Any doubt in the anyone? No, sir. Okay. So now we come to the opposite of advantages. What is that? So Disadvantages. Or demerits or limitations. So limitations of formal organization. Ignores human factor. हमने features में कहा ना, more focus is on work, designations rather than people. But कई बार काम पर अगर हम ज्यादा फोकस, इतना फोकस करने लग जाएं कि ह्यूमन फैक्टर को इग्नोर कर दें. सपोज एन एम्प्लॉय इज नॉट फीलिंग वेल और फिर भी हम उसे प्रेशराइज किए जा रहे हैं कि नहीं तुम्हें जो काम दिया है टाइम पे कंप्लीट करके दो, तो फिर वो गलत हो जाएगा. इतना ज्यादा हमें ऑफिशियल या फॉर्मल नहीं हो जाना चाहिए कि हम ह्यूमन फैक्टर को, बेसिक ह्यूमैनिटी को ही भूल जाएं. अगर ऐसा होता है तो वो लिमिटेशन बन जाएगी. Next point, delay in communication. Why? Because scalar chain follow होनी है. There are formalities to be observed. आप अगर स्कूल में कोई ऑफिशियल एप्लीकेशन लिखते हो तो आपको पता है आप
क्लास टीचर को हैंड ओवर करोगे, क्लास टीचर विल पास इट ऑन टू द इंचार्ज विल पास इट ऑन टू द प्रिंसिपल. So there is a proper process, plus there are formalities. उसमें एप्लीकेशन में आप सिंपली ये नहीं लिख सकते आई एम नॉट कमिंग टुमारो, माई ब्रदर्स वेडिंग, आई विल नॉट बी कमिंग फॉर नेक्स्ट 3 days. There is a proper format. The principal, name of the school, date at the top, then dear sir or respected sir. उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट मैटर पे आओगे, फिर नीचे सिंसियरली अपना नाम लिखोगे, क्लास सेक्शन लिखोगे. तो देयर आर सम फॉर्मेलिटीज. सो दीज प्रोसीजर्स, दिस स्केलर चेन, these formalities, because of all these, the communication takes some time. So delay in communication. जबकि अपने फ्रेंड से अगर आपको कोई बात करनी हो तब थोड़ी ना इतना टाइम लगाओगे, फिर तो सीधे डायरेक्टली पॉइंट पे आओगे. You will go directly to that friend and you will speak out whatever you want to say, right? Yes, sir. Next limitation. Sometimes plans are imposed strictly in the formal organizations without considering creative talent. ये हमने planning की limitation में भी पढ़ा था, remember? Rigidity reduces creativity. अगर plans बहुत strictly implement किए जाते हैं तो वो एम्प्लॉइज की क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देते हैं. दैट शुड नॉट हैपन. आर दीज क्लियर? एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस? Yes, sir. So now we come to the other type of organization, as we discussed, informal organization. Whenever 2 or more people meet, they come in contact with each other. There is a social interaction among them, and as a result of that social interaction, social relationships develop, friendships develop, or we can say informal relations develop between people. Okay. So whenever a number of people are working in any group, any formal group, personal and social relationships develop spontaneously. Spontaneously मतलब अपने आप develop हो जाती हैं. कोई create नहीं करता इन groups को, अपने आप create हो जाते हैं. On the basis of likes, कुछ लोगों की likes common है तो उनका एक group बन जाता है, या कई बार dislikes common है तो एक group बन जाता है. अगर एक पर्टिकुलर रीजन से कुछ लोग आते हैं तो हो सकता है उनका एक ग्रुप बन जाए. एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले कुछ लोग हैं, स्पेशली एमएनसीज में, तो उनका एक ग्रुप बन सकता है. सिमिलर कल्चर को बिलोंग करने वालों का सेम ग्रुप हो सकता है. सिमिलर इमोशनल लेवल जिनका है, जिनके इंटरेस्ट सिमिलर हैं, उनका एक ग्रुप बन सकता है. ठीक है. तो इन सब बेसिस पर ये इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं. फॉर व्हाट? फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर सोशल नीड्स. We all have social needs. What are these social needs? Need for friendship, need for love, affection, sense of belonging to a group, association. All these are social needs of every human being. तो इन needs की fulfillment के लिए ये groups बन जाते हैं, informal groups. ठीक है. और इनके network को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? Informal organization. Yes, absolutely right. So informal organization is the network of social relationships, the network of social relationships arising out of social interaction among employees. Clear? Yes, sir. अब आते हैं इसके फीचर्स पे. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने कहा था इट इज क्रिएटेड डेलिबरेटली बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. इनफॉर्मल के लिए हम क्या कहेंगे? कौन क्रिएट करता है? Self generated. Yes, it is self created, it is self generated. It emerges spontaneously, means on its own, on the basis of likes, interests, dislikes, etc. Second feature, originates within the formal organization. ऐसा नहीं है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से अलग कहीं जाकर, दूर कहीं जाकर बनती है. स्कूल में रिसेस में वो सारे इनफॉर्मल ग्रुप स्कूल के अंदर ही होते हैं. सो विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्ट. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
formal organization में there are certain rules which are to be followed by everyone, but informal organization में ऐसे कोई strict rules नहीं होते. But does that mean that in your friend circle you can behave in any manner you want? Is it so? No, sir. No. There are some group norms. Basic moral behavior is expected from every member, right? And if anyone misbehaves, then sooner or later the group may discard that member. Fourth feature, independent channels of communication. Formal में क्या था? Sir, scalar chain. Yes. और यहाँ पर तो कोई स्केलर चेन है नहीं. आपने किसी फ्रेंड से बात करनी है तो कोई चैनल नहीं है जिसके थ्रू आपने जाके बात करनी है. यू विल डायरेक्टली स्पीक टू दैट फ्रेंड इन योर इनफॉर्मल ग्रुप, इन योर फ्रेंड सर्कल. तो इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. और क्योंकि किसी की कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनफॉर्मल ग्रुप्स में सब बराबर है. तो इसलिए देयर इज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर. अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप लिखोगे, कई जगह हम लिखते हैं इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इन स्पेस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो वो स्पेस बड़े जरूरी और क्लियरली देना है. अगर इन और फॉर्मल के बीच में स्पेस नहीं दिया तो वो लगेगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और मीनिंग चेंज हो जाएगा और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे तो. ठीक है, इसी तरह से जब आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो और इन, तो तब इन और फॉर्मल के बीच में गैप नहीं आना चाहिए. गैप आ गया तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गई. मतलब आप कह रहे हो इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है लिखते हुए, बोलते हुए भी. Okay, sir. So informal organization has no definite structure. Advantages: communication is very fast because there are no formalities, no scalar chain. Members derive personal and social satisfaction because their social needs of friendship, love, affection, belongingness, these get satisfied through informal organization. Informal organization compensates for inadequacies of formal organization. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे जो गैप्स होते हैं, कहीं जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, उन्हें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर देती है, फिल कर देती है. कैसे? सपोज समटाइम्स इट हैपेंस, आई एम सिटिंग इन द स्टाफ रूम इन द स्कूल और एमपी हॉल से कुछ म्यूजिक वगैरह की आवाजें आ रही होती हैं और मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है स्कूल में. बीइंग अ टीचर इन द स्कूल, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. तो मैं स्टाफ रूम में और टीचर से पूछता हूँ ये क्या चल रहा है आज. सो वन ऑफ द टीचर्स whose son is in the primary section, she tells me कि सर वो मेरा बेटा भी ना पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, आज ये प्राइमरी डिपार्टमेंट का कुछ वो है, सॉन्ग कंपटीशन चल रहा है. तो the information which I did not get from official channels because I am not a part of the primary department, but I get that information through informal organization. Getting it? Yes, sir. Similarly, और ये बड़ी काम की चीज होती है कई बार. आपने नोटिस किया होगा कई बार आपके पेरेंट्स भी, आप जब उनकी बात नहीं मान रहे होते हो तो कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके फ्रेंड्स को बोलते हैं कि समझाओ जरा इसे, खाती नहीं है ठीक से, पढ़ता नहीं है प्रॉपरली. होता है या नहीं? Yes, sir. तो ये क्या होता है, ये यही चीज होती है जो हम बात कर रहे हैं. They are taking help of your informal group, your friend circle, to get the official or the main work accomplished. तो ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजर्स इसको यूज कर सकते हैं कई बार और करते हैं. अगर कोई एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा है, सपोज एज अ मैनेजर आपने उससे बात की लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट करता है आपसे बात करने में, तो वो खुल के नहीं बता रहा है क्या प्रॉब्लम है उसे, तो आप उसके फ्रेंड्स को बुलाकर उनके साथ डिस्कस कर सकते हो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों ये ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है. और फ्रेंड्स के थ्रू कई बार पता चल जाता है आपको कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, और फिर आप उसकी हेल्प कर पाते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. एंड
the employee comes back to the normal performance. या कई बार फ्रेंड्स की हेल्प के थ्रू आप समझा सकते हो, आपकी बात उसे समझ में नहीं आ रही, कई बार आप उसके फ्रेंड्स को बुला के कहते हो कि समझाओ जरा इसे कि ऐसे करना है काम, या इस तरह का बिहेवियर ठीक नहीं है जो इसका है, फ्रेंड्स समझाते हैं तो वो बात समझ में आ जाती है कई बार, ठीक है। तो इट कॉम्पेंसेट्स फॉर इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? Yes, sir. लिमिटेशंस, र्यूमर्स बड़ी जल्दी स्प्रेड होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि फास्ट कम्युनिकेशन है, कोई भी किसी को भी कभी भी कुछ भी कह सकता है। तो र्यूमर्स क्या होते हैं? जिसका कोई एविडेंस नहीं है, जो सच भी हो सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं, और पार्टली सच पार्टली झूठ भी हो सकते हैं। तो इस तरह के र्यूमर स्प्रेड होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। Yes, sir. ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अगर कभी भी आप देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन में र्यूमर स्प्रेड हो रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? उससे रिलेटेड फैक्ट्स लोगों को, सच जो है वो लोगों को बताना चाहिए, ताकि र्यूमर तो वहीं पे खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आप फर्दर काम कर सकते हो कि पता करने की कोशिश करो कहां से स्टार्ट हुआ, वो कई बार नहीं पता चलता। लेकिन जैसे ही कोई र्यूमर स्प्रेड हो रहा हो, सबसे पहला काम जो करना चाहिए, वी शुड टेल द फैक्ट्स टू एवरीवन। सेकेंड लिमिटेशन, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है अगर बहुत ज्यादा इनफॉर्मल बातों में ही लोग लगे रहे तो। और कई बार इनफॉर्मल ग्रुप्स में यूनिटी दिखा के एम्प्लॉइज डिजायरेबल चेंजेस को भी रेजिस्ट कर सकते हैं, तो वो गलत होगा, वो लिमिटेशन हो जाएगी। लिमिटेशंस क्लियर? Yes, sir. ठीक है। सो नाउ यू कैन गो थ्रू द डिफरेंसेस, this formal and, or we'll summarize the differences in the next class. Any doubt, anyone?